Hi investors and traders, welcome back to the channel. I hope you all made good money today. And in this video, मैं आप लोगों से बात करूंगी कुछ ऐसे स्टॉक्स की जहां पे डिविडेंड लगातार इंक्रीज हो रहा है। और मैं उन स्टॉक्स की बात किस लिए करना चाहती हूँ, उन स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पे डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है, बट फंडामेंटली वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स नहीं है। मैंने आपके लिए करीब अराउंड 2000-3000 स्टॉक्स फिल्टर किए और उनमें से वो स्टॉक्स निकाले जिनमें डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है और जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। I'm not going to give a buy recommendation. I'm not going to give you a sell recommendation. I'm not giving you a stop loss. आपको अपने हिसाब से उनमें ट्रेडिंग करनी है। आपको लगता है कि प्राइस अच्छा है, आप बाय कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं, यू नीड टू वेट, मार्केट में करेक्ट, तो आप उस हिसाब से उसमें एंट्री ले सकते हैं। मैं आपको कोई बाय और सेल नहीं करूंगी, मैं केवल एक आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। तो चलते हैं, मेरे पास करीब 6 स्टॉक्स हैं आपके लिए। तो पहला स्टॉक्स जो मेरे पास है वो है हाई एनर्जी बैटरीज। ये एक बीएससी का स्टॉक है और अगर मैं आपको इसके फंडामेंटल्स दिखाती हूँ तो ये कंपनी जो है कुछ 300 करोड़ की कंपनी है। पी कुछ 21% है, ROC इज अबाउट 36%, ROE इज अबाउट 37%। और प्रोज क्या है कंपनी के, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 87% CAGR and ROE is recorded at 41%. There are no cons. And then if I look into the sales, there has been a slight growth in the sales. I wouldn't say बहुत बढ़िया growth है, but some important points that I can notice here, that the operating profit margins are pretty much good. Then अगर हम EPS की बात करें तो earning per share is also considerably consistent. And then आती है बात operating profit margins की, तो they have been pretty much stable for the last 3 quarters at 39, 37 and 31%. और अगर हम बात करते हैं EPS in rupees for the last almost 11 years, so negative EPS से even positive में होके अब 20 रुपए और 15 रुपए के आसपास भी आ गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के रिजर्व्स की। तो कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं। और जहां तक बोरोइंग्स की बात करते हैं तो बोरोइंग्स इन्होंने थोड़ी सी अपनी बोरोइंग्स जो है रिड्यूस करी है, 40 से लेके दे हैव कम टू 28। And then if I look into the cash from operating activity, there is cash from operating activity and debtor days have gone down. और जहां तक बात है FIIs, they don't have presence and the DIs are about 6.67, although the promoters holding is less. ये एक कंसर्न रहेगा इस स्टॉक में। अब मैं आपको इस कंपनी की मैं आपको दिखाती हूँ कि डिविडेंड्स का क्या हाल है। तो आप देखिए, जहां ईयर 2013 में 1 रुपी दिया था, 21 में 5 रुपीज, अगेन 10 रुपीज। In 2022, they have paid 15 rupees as a dividend, a final dividend. So sometimes they give special dividend, sometimes they give a final dividend. So that is my first company that will be on my radar. Then we have Gloucester India. ये भी एक BSE का स्टॉक है और मुझे इसके फंडामेंटल्स बड़े अच्छे लगे हैं. I found the fundamentals to be extremely good. So this is Gloucester Limited. 921 करोड़ की कंपनी है, 921 crores की कंपनी है. Stock P is about 15, ROC is 9, ROE is about 5.66%. There are a lot of pros. Company is almost debt free. Company has is trading at 0.84 times the book value, and company is maintaining a healthy dividend payout. Company's working capital requirement has reduced from 128 to 95 days. There are some cons as well. But let's have a look at what's happening to the company's sales. So company's sales have been going quite well, except the June quarter of 2020, which is due to the corona. And if I look into the EPS, they have also been growing. And if I just look into the year on year, what is happening in the company's sales have definitely gone up from 2017. I want to see what is happening to the borrowings and the reserves. So reserves have been growing and the borrowings are pretty negligible with respect to the reserves. अब हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैश जनरेट कर रही है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ, और डेटर डेज जो है कुछ 15 दिन है, विच इज फाइन.
FIIs don't have a presence, promoters holding is good, and the DIIs are about 15%. नाउ इस कंपनी को अगर हम प्राइस को देखते हैं तो प्राइस में भी एक अगर हम नोटिस करते हैं तो देयर वाज अ पीरियड ऑफ डाउन ट्रेंड और एक बड़े ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल का पैटर्न बना था, बट उसके ब्रेकआउट के बाद कंपनी ने 700 से 1000 रुपीज का ऑलमोस्ट लाइक 40-45% का जंप दिया है कंपनी ने। बट अभी भी ये कंपनी मुझे अच्छी लगी, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, डिविडेंड अच्छा पे कर रही है और प्राइस लुक्स प्रीटी गुड। अगर हम ग्लॉस्टर का देखते हैं कि उन्होंने क्या डिविडेंड का क्या सिचुएशन है, लेट्स हैव अ लुक एट द डिविडेंड सिचुएशन ऑफ द ग्लॉस्टर। सो ग्लॉस्टर लिमिटेड इफ यू सी, इन्होंने 2022 में आज तक 3 बार डिविडेंड दिया है। एक स्पेशल डिविडेंड दिया है, एक फाइनल डिविडेंड दिया है और एक इंटरिम डिविडेंड दिया है। कुल मिला के इन्होंने 85 रुपीज का डिविडेंड दिया, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 10% ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू। अगर 835 की प्रेजेंट वैल्यू है स्टॉक की, 10% of the present value, which is a huge return in terms of the dividend. And company's fundamentals are also looking good, so you can consider it investing in the company. The next stock that looks good to me is VST India. This is how the stock looks like. It has been quite range bound. And जहाँ तक बात करते हैं VST के fundamentals की, so VST Industries is right here. कंपनी करीब 5000 करोड़ की कंपनी है, ROC is about 42%, ROE is about 31.7%. Company is almost debt free. Company is giving a good dividend. ROE is good. ROC dividend payout is about 58.8%. और जहां तक बात होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, दे हैव बीन प्रीटी मच कंसिस्टेंट ऑल दिस वाइल। एंड जहां तक हम बात करते हैं ईपीएस की, बहुत बढ़िया इन्होंने अपने ईपीएस मेंटेन किया है और बहुत बढ़िया ईपीएस दिया है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे इंक्रीज ही हुए हैं। और जहां तक हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर ईपीएस, फ्रॉम 61 रुपीज इट हैज बिकम 226 इन 2022। और जहां तक हम बोरोइंग्स की बात करते हैं, एब्सोल्युटली जीरो बोरोइंग्स, रिजर्व्स आर प्रीटी गुड एंड दे डू हैव ईयर ऑन ईयर बेसिस दे हैव cash from the operating activity. I'm not going to go into more detail, but have a look at the FII's presence. They have gone down a little bit in their presence, and even DIIs increased and then decreased, whereas public is quite strongly having a hold in this and promoters have little less. So that's a little concern. But VST, if I look into the VST and see what kind of dividends have they been paying, VST Industries, if I look into the dividends, they have been really very strongly paying dividends. Every year, if you see final 95, 103, 114, 140, they have been consistently paying their dividends, and which is roughly about 3% of their value, but looks very promising as of this point of time. The next stock that is on my radar is GlaxoSmithKline. So Glaxo, has been range bound for a very long period. If you notice, this is a space where the Glaxo has just been, dwindling at 1300 और 1000 से लेके 1900 के बीच में ही ऑसिलेट कर रहा है, और इट्स बीन जस्ट फॉलिंग डाउन फॉर क्वाइट सम टाइम, बहुत समय से नीचे गिरता जा रहा है। बट अगर कोई अच्छी कंपनी करेक्ट हो रही है तो इसका मतलब कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है उसमें एंट्री लेने की। कंपनी कुछ 22,000 करोड़ की है, stock P is about 54, ROC is 636, and ROE, return on equity, is about 81%. Companies reduced debt free, profit growth is 40% CAGR, ROE is about 41%. Company's been paying healthy dividend payout of 320%. You can go through the fundamentals yourself. Let me just take you to the FII's holding, which is about 2%, which has increased in the recent past. और जहां तक डेट की बात करते हैं, एक बार क्विकली डेट को भी देख लेते हैं, बिकॉज आई डोंट लाइक कंपनीज विथ ह्यूज डेट, सो वेरी नेग्लिजिबल डेट दे हैव। और जहां तक बात करें इनके रिजल्ट्स की, तो वो थोड़ा ऑसिलेट कर लेते हैं, कभी 2000, कभी 1900, अभी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। आई एम श्योर दे हैव बीन यूजिंग देयर डेट टू रीपे देयर
past borrowings or they're probably expanding their work. और जहाँ तक EPS की बात है, EPS में भी थोड़ा सा लाइक नेगेटिव टच आया है. अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करें तो ऐसा बात नहीं है, तब देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ इन द अर्निंग पर शेयर. सो GlaxoSmithKline is a good stock at the cheap valuation. Stock has been just in the downtrend. So अगर किसी को accumulate करना हो, you can consider, but I don't know what price you would like to do. when अगर आपको long term perspective हो, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है. Okay, you can just accumulate whenever as and when you get the chance. Then the next stock that is on my radar is Swaraj Engines. So Swaraj Engines also has beautiful fundamentals. Swaraj Engines, roughly about 2000 crore की company है. P is about 16, ROC is about 50 and ROE is about 37%. And company is almost debt free. Company is paying good dividend. Company's ROE is about 34% and healthy dividend of 82.5%. Okay, so the company's growth, अगर हम देखते हैं 2019 से, there has been a growth but not as significant as it could have been. Operating profit margins have grown. और अगर हम बात करते हैं EPS की, तो EPS में भी एक ग्रोथ है. और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस EPS की बात करें तो ऑलमोस्ट EPS 3 टाइम्स हो गया है. और सेल्स जो है बढ़ के ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गई हैं. और जहां तक हम बोरोइंग्स की बात करें तो 0 बोरोइंग्स है. Again, a very positive point. And cash from operating activities about 103 crores. और हम अगर FIS की होल्डिंग देखते हैं तो roughly about 2% and promoters are about 52%. Public holding is about 36%. So अगर देखा जाए एक broad perspective पे, स्वराज engines look pretty good. फंडामेंटली बहुत अच्छा लगता है, बट आई एम गिविंग नो बाय और सेल. आपकी चॉइस है, आपको कब लगता है कि मार्केट कंसोलिडेट कर चुका है और अब इसको ऊपर जाना चाहिए. एक बार मैं आपको इसके डिविडेंड्स भी दिखा देती हूँ. सो स्वराज इंजन्स, here is Swaraj Engine. 2019 में they paid 50 rupees, 20 they paid 40 rupees, 2021 they paid 69 rupees, and 20 final dividend they paid is 80 rupees. Every year on year they have increased their dividend price. और अगर हम 80 रुपीज लेके चलते हैं और करंट प्राइस हम लेके चलते हैं 1560 और लेट्स से 16,000, तो 5% का डिविडेंड तब भी है. 5% का, no, 0.5% का डिविडेंड on the current value, you still get a 0.5% dividend. So this stock looks pretty good. The fundamentals are strong. You can decide your trading plan. I'm not giving you any trading plan. The last stock that is on my radar and a lot of you have been accumulating it is VETL. Now VETL ने एक bottom लगाया है at about 206, and after that the price has been just in uptrend. The price have been in just uptrend. एंड अभी भी मुझे VETL जिस हिसाब से आज मेटल सेक्टर में एक रिवर्सल आया था, मुझे ऐसा लगता है कि अगर VETL 327 328 के ऊपर जाएगा तो देयर विल बी एन अप ट्रेंड दैट कैन बी expected. And I don't want to go through the fundamentals of VETL. It's a NSE stock, FNO stock, so the fundamentals definitely will be good. हम quickly इसका dividend pattern देख लेते हैं. Here is the dividend pattern. अगर आप 2020 में देखते हैं तो the company has paid about 13.4 rupees. In 2021 the company has paid 23 rupees. और अगर 2022 की बात करते हैं तो अभी तक इसने 30, 60, 7, I think 30, 60, 81 और 82 रुपीस का डिविडेंड अभी तक दे दिया है. The price is about 311 rupees और उस पे आपको 80 रुपए का डिविडेंड मिल चुका है. आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना रिटर्न आपको मिला है VETL के ऊपर. The price looks good, the company looks promising, and एक बैरियर क्रॉस होने के बाद मुझे लगता है एक अच्छा अप मूव आने की पॉसिबिलिटी है. डिविडेंड्स आर गुड, और ये जो डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने होते हैं, बिकॉज ईयर ऑन ईयर यू शुड बी एबल टू जनरेट डिविडेंड इनकम. सो स्टॉक्स में आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, और मैं वाटरमार्क के साथ आपको रिमाइंड करा देती हूँ. सबसे पहला स्टॉक है ग्लोस्टर लिमिटेड. दिस इज द फर्स्ट स्टॉक. सेकेंड इज VST लिमिटेड, VST Industries. Next is GlaxoSmithKline. Next is High Energy.
देन स्वराज इंजन्स एंड देन VETL। ये मेरे 6 स्टॉक्स हैं, आप इनको लगा के देख सकते हो और अपने हिसाब से। मैंने आपके साथ सारे फंडामेंटल्स शेयर किए और हाउ दे आर इंक्रीजिंग देयर डिविडेंड पे आउट्स वो मैंने शेयर किया है। वो कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है और अच्छा प्रॉफिट कमा रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वही आपको डिविडेंड देगी। और ये VEDL, सो ये 6 कंपनीज मेरे रडार पे रहेंगी और इनमें every dip will be an opportunity for buying the stock. So keep these stocks on your radar and do join me for live trading every single day from 10 to 11 and make good money along with us. With this, I'll be signing off. All the best. Take care. See you in the next video.